All right. Hi, everyone. Good evening. Yeah, hi, Rugved. Good evening, Tanmay. Good evening, Anjali. Hi, Shreya. Good, Aditya. All right. Hi, everyone. So, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था, एक बार मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ. Right, we had spoken about heat and work, and we did talk about calculation of work, calculation of heat, and the sign convention for heat and work. All right, so I think almost pura class was dedicated to heat and work itself. Now, इनफैक्ट लास्ट क्लास में मैंने ये इंटरनल एनर्जी का भी डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के साथ में. हाउएवर लेट्स से अभी यहीं से हम लोग रिज्यूम करते हैं सो दैट कंटिन्यूटी रहे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट of total internal energy and how it will lead us to the first law of thermodynamics. So I today aim to start with the first law of thermodynamics, and आप मान लो कि आज से आपका thermodynamics का कोर पार्ट स्टार्ट हो गया है. पिछली दो क्लासेस went into understanding the background, like setting up what thermodynamics is. So now in this class as well as upcoming classes, we are going to start doing some numerical, some questions also into thermodynamics. So total internal energy was a thermodynamic property. जैसा मैंने आपको बताया था in the last class, it is the sum of all forms of energy possessed by the system by the virtue of its existence. Now, when we talk about this total internal energy, the word internal becomes very important because we will not include any energy because of external forces like gravitational or electromagnetic or any other external forces. Like gravitational potential energy नहीं होगा. Like कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, that is not going to be taken into account. It is internal energy of the system. So for example, let's say we have a system which is a gas contained in a vessel. तो इस गैस के अंदर जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो बॉन्ड्स हैं, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, लाइक जो इनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होंगे एटसेट्रा, सब मिला मिलू के जो भी एनर्जी टर्म्स आ रहे हैं इनहेरेंट टू द सिस्टम, दैट added up all together is what gives us total internal energy. Now, this internal energy is a state function. As I said, that it is an inherent property of the system itself, but its absolute value is not something which we will be able to determine. Right? And do you remember what was the reason that I told you that we can't determine the absolute value of the internal energy? कुछ याद है आपको पिछली क्लास का? हाँ, correct, Sarthak. Because of the potential energy part. This is something which we define by taking reference. Right? So we are not able to comment upon that, and as a consequence, we are not able to comment upon the absolute values associated with total internal energy. However, as I said, that is not going to be a problem because our focus in this chapter will be to understand delta E, that is the change in the internal energy. Now, notice करना, अब हम change in internal energy के ऊपर work करना शुरू कर रहे हैं. So delta E or change in internal energy will be equal to the change in kinetic energy as well as change in potential energy, right? All added up together. Now, to simplify our understanding, we are going to begin our discussion of thermodynamics with ideal gases. That will be our start. With the discussion of ideal gases, we can simplify the change in internal energy as just the change in kinetic energy. We can go about neglecting any changes in potential energy.
Why would it be so? This is fairly easy to understand. When we are going to do thermodynamic processes on an ideal gas, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना, when we are going to do thermodynamic processes on ideal gas, क्या होंगे वो? हम एक आइडियल गैस को किसी पीवीटी कंडीशन से किसी दूसरी पीवीटी कंडीशंस पे लेके जा रहे होंगे, कंप्रेस कर रहे होंगे, एक्सपैंड कर रहे होंगे, हीट कर रहे होंगे, कूल कर रहे होंगे. Now when we do those things, what happens to an ideal gas primarily is that changes in its kinetic energy happens. Changes in its temperature, changes in its kinetic energy happen. What about the potential energy? Potential energy यहाँ पर कुछ खास change नहीं होगा. Why? Because let's say you had N2 as the gas present inside, nitrogen gas, right? So do you think nitrogen gas को अगर मैं compress कर रहा हूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी पे कुछ फर्क आ रहा होगा? Will it be something impacting the bond energy of nitrogen molecules? The answer is no. Do you think न्यूक्लियर एनर्जीज पे कुछ फर्क आ रहा होगा? लाइक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर कुछ फर्क आ रहा होगा अगर मैं नाइट्रोजन गैस को कंप्रेस या एक्सपैंड कर रहा हूँ? The again answer is not really. Right? Because a gas is highly compressible and its behavior is governed by its motion. Okay, the molecules and their movement. Acha, what about the electrostatic potential energy? You might say that for a real gas, okay, had I taken a real gas, तो you might come up and say कि सर हाँ, real gas के केस में जो van der Waals forces होंगे वो तो depend करेंगे, they might change, and I would be in agreement to you on that okay, for real gas I might take it into account, but ideal gas में तो हम ये assumption मान के चलते हैं ना that there are no attractive forces, no repulsive forces, there are no forces between molecules. Like between molecules we are just assuming them to be like hard spheres. So even if we expand or compress the gas, like we don't take into account these changes. So hence our understanding for ideal gas can be simplified that for change in internal energy we can go about and work with the change in kinetic energy. We will not be taking this kind of an assumption for solids and liquids. Okay, this is strictly we are taking for an ideal gas. ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्टार मार्क करके लिख देता हूँ, not to be applied. आप लोग करोगे भी नहीं वैसे फ्यूचर में, but still putting it upfront, not to be applied on liquids and solids. How will we deal with liquids and solids? वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा. पहले हम अपना एक लर्निंग कर्व बिल्ड कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद आइडियल गैस. नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, मैंने ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने ला दिया दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए अगर हमें समझना है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब टू अंडरस्टैंड काइनेटिक एनर्जी, राइट, टू अंडरस्टैंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड मोशन, राइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोशन, अब हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करेंगे because in KTG we had only focused on translational motion. जब हमने kinetic theory of gas पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ translational motion के बारे में बात किया था. However, a molecule can also possess rotational motion as well as vibrational motion, right? So for example, let's say you have N2 का molecule, right? This molecule present inside a system can translate in any random direction whatsoever it likes. This blue arrow says a representative of it. Check him. This N2 molecule can also rotate about any axis it wants. This red curve is a representative of the rotational motion that it can have while translating.
ठीक है. A molecule can also possess vibrational motion. So यहाँ पर आप नोटिस करना N2 में ये जो atoms हैं, they can be, right, together the molecule can be translating, together the molecule can be rotating, but inside the molecule the atoms may possess vibrational kinetic energy also. Like you can think of the bond like a spring. So along that bond or around that bond, there can be vibrational motion of atoms. These green arrows are representative of that. So to understand the kinetic energy of associated with molecules, we need to understand motion, and we can classify that motion into translational, rotational and vibrational. जैसा मैंने आपको बताया था that when we were discussing KTG, we had only focused on translational motion because वहां पर भी you can kind of say only took into account that a molecule is a hard sphere and that hard sphere just translates. But it's not necessary that a molecule is just a hard sphere. It can be of a irregular shape. Now that you know about bonding, like for example, say ammonia gas, right? It can be of a different shape, and because of those complexities, there can be these other motions associated with molecules. अच्छा, सबको ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन समझ में आया? Does anyone have any doubt? वाइब्रेशनल मोशन जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेद, like for example, I can take the simplest example to be say a diatomic molecule like N2. In this, the atoms can vibrate along the internuclear axis, and that vibration is a form of energy, kinetic energy. So we associate that kinetic energy with vibrational motion. हाँ, ये सब मोशन के टाइप्स है और इन सब मोशन के साथ में kinetic energy associated है. Right? All of them can happen simultaneously. ठीक है. Now, हाँ, इसमें पूछो और क्या डाउट है? यस यस, दे कैन ऑल पोजेस साइमल्टेनियसली. मैंने आपको बोला ना, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो. जैसे ये N2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है. N2 का मॉलिक्यूल एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम ये ट्रांसलेट कर रहा है किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, एंड ये ट्रांसलेट करते हुए रोटेट भी कर रहा है. ठीक है. मे बी इन सम रैंडम मैनर अराउंड सम रैंडम एक्सिस, वी डोंट नो. ठीक है, हो सकता है ना ये N2 का मॉलिक्यूल, राइट, इट कैन रोटेट इन दिस मैनर, राइट. ये N2 का मॉलिक्यूल इट कैन रोटेट इन दिस मैनर अराउंड दिस एक्सिस. ये N2 का मॉलिक्यूल से ये अंदर बाहर एक्सिस है उसके अराउंड ऐसे भी रोटेट कर सकता है. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. सो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्या? बिल्कुल हो सकती है ना, राइट. वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है. सो ये N2 का मॉलिक्यूल है अभी, राइट. दो एटम्स नाइट्रोजन के हैं, दे आर relatively away from each other, then they come closer to each other, then they are again away from each other. You can think of it like a spring, that the two atoms are vibrating along the bond. That will be vibrational motion, and all of it can happen simultaneously. ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही चीज होगी. All of it can happen together.
That's why when we are considering or understanding the kinetic energy of molecules, we are talking about its motion and its types, translational, rotational and vibrational. अब आप नोटिस करना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड से अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ यू हैड समथिंग लाइक नियॉन, देन उसके साथ में आई वुड से ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल नहीं है, क्योंकि इट्स अ सिंगल एटम ओनली, राइट? इट वुड बी जस्ट ट्रांसलेटिंग, राइट, in any other directions. There will be no rotational motion associated with it. In fact, there would be. So I should actually not say cancelling out rotation. I would be kind of neglecting it. Why it will happen? So I will talk about it. And there will be no vibrational motion. Right? There is no bond along with or around which neon atom would vibrate. ठीक है, सो अब यहाँ पे नोटिस करना, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज थ्री वन बाय वन. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट, व्हाट डू आई मीन बाय टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल? जस्ट व्हाट आई स्पोक अबाउट. मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर कंडीशंस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ molecule and temperature conditions, we are going to write down a result called as contributing degree of freedom. What do I mean by this? Independent dimensions of motion. For example, the simplest to understand is translational motion. Now let's say you have a vessel in which a gas is present and uske molecules, let's say focus on one molecule, it can translate or show translational motion in any random direction, right? What do we do to understand this kind of motion? As part of understanding the 3D world around us, right, what we do is that we break down this translational motion into its independent dimensions or independent components, x, y and z axis के along translational motion, right? For example, imagine you are in your room and there is this one molecule which you are trying to focus on, and that molecule is moving in any random direction. But if you were to study its motion, the translational motion only, then you would take up that molecule and take up its direction and break it down into x component, y component and z component, like how you do it in vectors. So that is what we are talking about here as the independent dimensions of motion. So these are called as थोड़ा सा फैंसी वर्ड आ रहा है आपके लिए, these are called as degree of freedom. So for a translational motion, the independent dimensions of motion would be 3: x axis, y axis, z axis. Similarly, यहां पर नोटिस करना, if I talk about rotational motion, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, and if I talk about its independent dimensions, तो हम लोग कैसे सोचेंगे, right? So you imagine N2 molecule,
This will be the simplest to understand. Now N2 molecule में imagine it undergoing rotation. Any random rotation that you would want to think of. Right? Imagine this N2 molecule present in front of you in the room, and ये translate तो कर ही रहा था, like it was going from one region to another region, but translate करते करते साथ में ये rotate भी कर रहा था. कैसे rotate कर रहा था? Randomly, मतलब जो भी possibility है कैसे भी rotate कर रहा होगा, I don't know, but कर सकता है. अब उस rotational motion को भी जब अपन स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, डोंट थिंक लाइक अर्थ, डोंट थिंक लाइक मार्बल, दोज आर जस्ट स्फीयर्स. आई एम आस्किंग यू टू इमेजिन अ मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप like this N2 molecule. I am asking you to kind of think of it, how it is rotating. ठीक है, हाँ इसमें एनिमेशन क्या देखोगे यार तुम, मतलब मुझे ही देख लो, रुको, लेट मी सी इफ आई कैन switch on the video and you guys can understand it better. Okay, can you guys see me? Can you guys see this pen? All right, so imagine this to be the N2 molecule. ठीक है, अब this can undergo translation, right? Translation कैसे हो सकता है? Like ये randomly किसी भी direction में जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, करेक्ट. अब लेट्स से रैंडमली इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस ट्रांसलेशनल मोशन को आई कैन ब्रेक डाउन इनटू लाइक अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, इस तरीके से कर सकता हूं मैं. दैट विल बी ब्रेकिंग डाउन द ट्रांसलेशन मोशन. अच्छा, अब नोटिस करना, ये N2 मॉलिक्यूल है, इधर एक नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, एंड दिस कैन बी अंडरगोइंग रोटेशन, right, while it is translating also, like it is going from here to there, it is translating as well as rotating, right? So this is one kind of motion it has, translational, and साथ में rotate भी कर रहा है. अभी random rotation हो रहा है, like I don't care, ऐसे rotation करा लो, ऐसे rotation करा लो, जैसा आपका मन है वैसा rotation करा लो, right? So this will be the rotational motion that I just spoke about, random rotational motion. अब इस rotational motion को यहाँ पे observe करना that this rotational motion can be now broken into again 3 independent dimensions. कैसे? I can again look at my axis x, y and z, right? So I can have rotation about x axis. This will be rotation about x axis. I can have rotation about the y axis. So this will be rotation about the y axis, right? I can have rotation about the z axis, like z axis के around. ठीक है, मतलब it will be something like कि ये molecule इस तरीके से move कर रहा है. So these will be the 3 independent dimensions in which I can bring it down. ये समझ में आया? रोटेशनल मोशन के 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस. ट्रांसलेशन क्या था? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, राइट? अच्छा, वाइब्रेशन के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, लाइक इफ इट्स अ सिंगल एटम तो like there is no vibration associated. If it is diatomic, something like N2, right, then इसमें like along the bond,
ठीक है, वही एक वाइब्रेशन पॉसिबल है along the bond like a spring. But हाँ, अगर let's say it is a polyatomic molecule, 3 एटम्स हैं, नॉन लीनियर है, तो फिर इसमें अब और कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है. ठीक है, देयर कैन बी मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज दैट कैन कम व्हेन वी टॉक अबाउट वाइब्रेशनल मोशन. यहाँ पर अब वाइब्रेशन के बारे में मैं डिस्कस करने जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा इमेजिनेशन लगेगी, तो अभी के लिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना. For these 3 types of motions, translational, rotational and vibrational, ठीक है, depending upon the type of molecule, following are the contributing degree of freedom. एक एक करके नोटिस करना. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा हो गया? लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, दिस टाइप ऑफ गैस. तो इसमें देयर आर ओनली 3 translational degrees of freedom along x-axis, along y-axis, along z-axis. Then you might say कि रोटेशनल का 0 क्यों लिख दिया है? रोटेशनल का हमने 0 इसलिए लिख दिया है that because we are neglecting rotational motion about an axis that passes through the atom itself. What do I mean by it? तो यहां पर आप नोटिस करना, एक एटम अगर किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता, ठीक है, ये मेरा एटम है, ठीक है, ये किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता, देन आई वुड हैव कंसिडर्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन इट वुड हैव बीन सिग्निफिकेंट. बट अगर मेरा एटम, ठीक है, ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द एटम इटसेल्फ, ठीक है, बिकॉज इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, दीज आर पॉइंट मास ओनली. तो अगर हम एक ऐसी एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पॉइंट मास के थ्रू ही जा रही है, उसके अबाउट अगर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, then this rotational kinetic energy is negligible. We can go ahead and neglect it. ठीक है, that's why for a monoatomic gas यहाँ पर rotational degree of freedom, right, जो contributing रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर contributing के बारे में बात करी जा रही है, we are going to take that as to be 0. ठीक है, ट्रांसलेशनल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ में आए? डू वी अंडरस्टैंड ट्रांसलेशनल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? हाँ, कोई बताना चाहेगा? हाँ, हार्दिक तुम बताओ, ये सुमित डफर को समझ में नहीं आ रहा है. एक्स, वाई और जेड. हाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नोटिस करो ना, डेफिनेशन क्या लिखी मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, इंडिपेंडेंट डायमेंशंस ऑफ मोशन, राइट. तो जब हम ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए मैं यही बता रहा हूं दैट ट्रांसलेशनल मोशन कैन बी ब्रोकन डाउन into 3 independent dimensions of motion, along x, along y and along z. So those are the 3 degrees of freedom. Then rotational motion के बारे में मैंने भी बताया आपको that rotational motion की भी 3 degrees of freedom रहेंगी
about x axis, about y axis, and about z axis. However, for a monoatomic molecule, I did not take them to be contributing because rotation kinetic energy of a point mass about an axis passing through the point mass is negligible. ठीक है. हाँ, मतलब आप सोचो ना, आप खुद इमेजिन करो, मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट थोड़ी ना लूंगा. अगर मैं रोटेशन के बारे में बात भी कर रहा हूं एक नियॉन के मॉलिक्यूल की, तो ये नियॉन का मॉलिक्यूल जो है ये कोई फोर्स तो एक्सपीरियंस कर नहीं रहा, right? It is not experiencing some kind of force by some other particles or some other molecules, like ideal gas है ये अपनी. तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये नियॉन का मॉलिक्यूल किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट करे. ठीक है. तो जो मैंने रोटेशन के एक्सिस लिया वो क्या लिया? इफ पॉसिबल देन इट वुड बी अराउंड इट्स ओन सेंटर, राइट? एंड उस केस में the kinetic energy that is to be there because of rotational motion is something which can be neglected. ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे भी सही, ठीक है. अभी आई थिंक आप लोगों को इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज यू गाइज हैव नॉट स्टडीड रोटेशनल मोशन. आप मैकेनिक्स में आगे पढ़ोगे रोटेशनल मोशन, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो उसमें आप ये चीज पढ़ोगे दैट फॉर अ पॉइंट मास rotating about an axis passing through itself, moment of inertia is 0. ठीक है. Now हाँ, yes, you can do that, but for the sake of our understanding, right now we are talking in terms of Cartesian coordinate system only. अच्छा, अब वाइब्रेशनल मोशन के बारे में नोटिस करना. फॉर अगेन मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, there is no vibrational motion associated because there is no bond formation that is there. हाँ, आप बोल सकते हो शिवांक, यू कैन थिंक ऑफ इट इन दैट वे ऑल्सो. अब नोटिस करना नेक्स्ट, यू कैन हैव डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स समथिंग लाइक N2O2 H2 F2 Cl2, like these are diatomic molecules, diatomic gases का एग्जांपल. नाउ इसमें अब नोटिस करना जो कंट्रीब्यूटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल विल बी अगेन 3, राइट? अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया वो पेन का एग्जांपल लेते हुए दैट N2 molecule can translate in any random direction and it can be then broken down into 3 independent dimensions along x, along y, along z. Okay. Then I talked about the rotational motion of N2 molecule also, right? I took that pen and started rotating it randomly while it was translating. Now that rotational motion can also be broken down into 3 components. क्या 3 components थे मैंने आपको बताया, right? One about say x axis, let's say if I am putting this as x axis, this as y and this as z, right? So एक तो हो गया say about x axis, ठीक है. दूसरा क्या हो जाएगा, say about z axis, like मान लो ये अंदर बाहर होता हुआ एक्सिस है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अंदर बाहर है, तो उसमें ये कैसा रोटेट कर सकता है, it can rotate about that अंदर बाहर का एक्सिस also, right, in this way. ठीक है. This is about the z axis, right? What about the rotation about y axis? Rotation about the y axis
this will be something that we'll be again neglecting. Why? Because the axis is again passing through the point masses. This rotational energy is something that can be neglected. राइट, तो मैं एक बार वापस से आपको वीडियो ऑन करके बताता हूँ, वापस से ध्यान से यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। ये N2 का मॉलिक्यूल है, राइट, एंड नाउ इमेजिन, say this is x axis and towards you this is z axis, right, x axis z axis, and maybe left right is y axis, right. So अब आप नोटिस करो ये x axis है, ठीक है। x axis के अबाउट this motion, this will be the rotation about the x axis, oh sorry, my bad, this was about z axis, ये x axis है, हाँ, तो ये x axis के अबाउट this is the rotation motion, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना है, हाँ लेना है, ठीक है। ओके, दिस वाज द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा ये इस तरीके से, ठीक है। दिस इज अबाउट द जेड एक्सिस। नाउ इसके अबाउट रोटेशन काइनेटिक एनर्जी लेना है, हाँ लेना है, ठीक है। नाउ दिस वाज द एक्स एक्सिस, राइट, थ्रू द मॉलिक्यूल। अब इसके अबाउट रोटेशनल मोशन कैसा है? इसके अबाउट रोटेशनल मोशन इज समथिंग लाइक दिस। इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेना है? द आंसर इज नहीं लेना है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन इनटू अकाउंट। This is something which can be neglected because the axis is passing through the point mass itself, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, that is why out of 3 I have only taken 2, ठीक है। वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस से ध्यान से सुनना आप। This is the N2 molecule right now in front of you. Now this N2 molecule can rotate randomly, ठीक है, कैसा भी रैंडम मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन। बट अब इस रोटेशनल मोशन को मुझे ब्रेक डाउन करना है, आई हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। तो मैं कैसे बोलूंगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इनके अबाउट ब्रेक डाउन कर सकता हूँ इसको। तो ठीक है, ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, दिस काइंड ऑफ रोटेशन, राइट। अब इस काइंड ऑफ रोटेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सिस जो है वो मेरे मास के थ्रू पास नहीं हो रही है। मेरा एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, और ये इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज सिग्निफिकेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इफ आई थिंक दिस काइंड ऑफ रोटेशन। सो दिस वाज अलोंग दी और अबाउट दी एक्स एक्सिस, करेक्ट। अच्छा, अब ये जेड एक्सिस था आपकी तरफ आता हुआ, राइट। नाउ दिस जेड एक्सिस is again not passing through the point masses, ठीक है। point mass कहाँ पर है? एक इधर है, एक इधर है। this is the z axis. इसके about rotation is something in this way. should I consider the rotational kinetic energy? बताओ पृथ्वीराज, should I consider the rotational kinetic energy? I should, because ये axis था और ये मेरे point mass है, right? they are rotating about the axis, so this is a significant rotational kinetic energy, ठीक है। अब आप ये y एक्सिस लो, ठीक है, ये y एक्सिस लो। तो इस y एक्सिस के अलोंग कैसा रहेगा? दिस इज द y एक्सिस। इसके अबाउट रोटेशन कैसा होगा? इस तरीके से, राइट, लाइक आई एम रोटेटिंग माय फिंगर्स, आई होप यू कैन सी दैट। नाउ दिस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी is something which you can neglect, because this is the rotation happening about an axis which is passing through the point masses, right? यहाँ point mass था, यहाँ point mass था, इनके थ्रू पास होता हुआ है, उसके about इसको, इस rotational kinetic energy को मैं neglect कर रहा हूँ, ठीक है। so that is why out of the 3 I have only taken 2. समझ में आया? हाँ, मॉलिक्यूल तो कैसा भी रोटेट करेगा हर्ष, मॉलिक्यूल तो कैसे भी रोटेट करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही रोटेट करेगा या ऐसे ही रोटेट करेगा, मॉलिक्यूल कैसे भी रोटेट कर सकता है रैंडमली,
मैं उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। जैसे ट्रांसलेशन के बारे में बताया मैंने, ट्रांसलेशन कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कैसे भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, राइट। वी व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू इंडिपेंडेंट डायमेंशंस, तो 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस आते हैं ना। समझ में आया अभी? हाँ। सो नाउ, अब आउट ऑफ 3 मैंने 2 क्यों कंसिडर किया है वो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वाइब्रेशनल इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा है, अब आप नोटिस करना दैट अलोंग दिस बॉन्ड, लाइक ये मेरा एक नाइट्रोजन का एटम था, एक नाइट्रोजन का एटम था, तो अलोंग दिस बॉन्ड the vibrational motion will be happening. Like imagine this bond to be like a spring, and along this bond the 2 nitrogen atoms can vibrate, and corresponding to that you have one vibrational degree of freedom. ठीक है? So this is in case of diatomic molecule. अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना इवन इन केस ऑफ, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा हूँ। मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक आर फेयरली इजी टू हेल्प एंड विजुअलाइज, बट अब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर पॉलीएटॉमिक केसेस. Now polyatomic, maybe I have bifurcated them into 2 categories. So there is polyatomic linear and there is polyatomic non-linear. Polyatomic linear, now that you know bonding, you can understand what is polyatomic linear. These are linear molecules, like इनका geometry आपने देखा है, that they will be linear in shape, and non-linear is something which will be like 3-dimensional, like for example ammonia, SO2, H2O, CH4, these will be non-linear molecules. अब नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना दैट बीट पॉलीएटॉमिक लीनियर या बीट नॉन लीनियर, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सोचने में। ठीक है, मेरा इवन कॉम्प्लिकेट सा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, तो आई कैन ब्रेक डाउन दैट ट्रांसलेशनल मोशन इनटू 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस। ठीक है, रोटेशनल मोशन के ऊपर फोकस करना, दैट रोटेशनल मोशन कैसा रहेगा। रोटेशनल मोशन में ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करना दैट अगर मेरा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, लेट्स से समथिंग लाइक SO2, राइट, SO2 में कैसा है, ठीक है, ये मेरा SO2 का मॉलिक्यूल का शेप था। ठीक है, नाउ ये SO2 का मॉलिक्यूल जो है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, तो मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल करेगा। आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है समझ में? डू यू गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सो ओके, लेट्स से ये CH4 जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कार्बन पर। परफेक्ट, तो आपको आता है सेंटर ऑफ मास, देन आई डोंट नीड टू टीच यू। आपने जो सोच के आंसर सी बोला वो सही है। ठीक है, तो वैसे ही SO2 है। अब SO2 में एक्चुअली सल्फर ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे है, राइट। सो यू कैन थिंक ऑफ कि एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? समवेयर एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया ना एक तरीके से, अगर मैं देखूंगा तो इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा?
हाँ, had it been like equilateral triangle and all things identical तो मैं बोलता कि centroid, in-center, circumcenter वहां पे आता. But let's say if it was एक सल्फर है, दो ऑक्सीजन है, तो somewhere कहीं ना कहीं बीच में आएगा. Inside, I would say. ठीक है. तो यहाँ पर let's say this is the center of mass. ठीक है. अब इसके about एक this, let's say if I talk this to be x axis, y axis, z axis. ठीक है. तो x के अबाउट रोटेशनल मोशन में कंसिडर करूंगा. ठीक है. ये y है. y के अबाउट रोटेशनल मोशन, शुड आई कंसिडर दिस? इज द एक्सिस पासिंग थ्रू माय पॉइंट masses? द आंसर इज इट इज नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट masses. सो अब मैं इसके अबाउट भी रोटेशन कंसिडर करूंगा. बिल्कुल. व्हाट अबाउट द z एक्सिस? इज इट पासिंग थ्रू माय पॉइंट masses? बिल्कुल भी नहीं. करेक्ट. So again, I would consider this to be also a contributing degree of freedom. I will consider this rotational kinetic energy. तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो, अब मैं तीनों के तीनों rotational degree of freedom consider कर रहा हूं. So do you understand the three in this column now? नहीं नहीं, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं पास कर रहा ना. मैंने भी बताया ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास ये ऑक्सीजन के थ्रू कहाँ पास कर रहा हूं. ठीक है. सो आपको एटलीस्ट रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ में आ गए. ठीक है. सो नाउ आई कैन एटलीस्ट से इतना. ठीक है. एक बार के लिए मैं जूम इन कर देता हूं ताकि मैं वाइब्रेशन को स्क्रीन से निकाल दूं. मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं नाउ दैट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मोशन and talking about translational and rotational motion and understanding the independent dimensions of translational and rotational motion. ठीक है. We are able to get an answer to the contributing degrees of freedom. मोनोएटॉमिक में ट्रांसलेशनल के लिए 3, रोटेशनल के लिए 0, डायटॉमिक के लिए 3 एंड रोटेशनल की 2. पॉलीएटॉमिक लीनियर में ट्रांसलेशनल 3 बट रोटेशनल स्टिल 2 बिकॉज वन दैट इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसको काउंट नहीं करेंगे. एंड पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल. इतना आपको समझ में आ रहा है? इज दिस समथिंग विच यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड? ओके, ग्रेट. अब नोटिस करना, इन 99% ऑफ द क्वेश्चंस वाइब्रेशनल मोशन का डिस्कशन नहीं होता है. In 99% of the problems that you are going to come across, vibrational motion का discussion नहीं करा जाएगा. And अगर vibrational motion का discussion करना भी होगा तो भी क्वेश्चन में आपको अलग से स्पेसिफाई करके बताएंगे कि भाई वाइब्रेशनल मोशन को अकाउंट में लो. If they are not saying anything, then you need not take into account. Why? Because vibrational kinetic energy, this becomes significant only at high temperatures. What do I mean by high temperature? Thousands of kelvins and degrees centigrades wali range mein. That is where this vibrational degree of freedom becomes relevant. So in booklet, when you will be solving questions, I don't think booklet में एक भी question है. शायद एक है, शायद एक भी नहीं है. बुकलेट में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा
जिसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया होगा। बुकलेट में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट आप बुक्स अगर सॉल्व करोगे तो आपको एक आध बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी किसी ना किसी क्वेश्चन में। ठीक है, लो टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशन होता है, बट एज ए सेड नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन ने यहां पर ये रोटेशनल मोशन का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लेक्ट किया ना, that is where at low temperature the vibrational motion can also be neglected. हम लोगों को वाइब्रेशनल मोशन कब लेना है? जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दिया जाए। ठीक है, ओनली व्हेन द क्वेश्चन सेज कि भाई आप लो तभी लेना, अदरवाइज कभी भी मत लेना। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है तो यू जस्ट टेक इनटू अकाउंट द ट्रांसलेशनल एंड द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नाउ before I start talking about vibrational degree of freedom, let me use my knowledge of translational and rotational degree of freedom and move forward. मैं वाइब्रेशन पे एक बार दोबारा आऊंगा, बट एटलीस्ट ट्रांसलेशनल रोटेशनल आपको समझ में आए तो इस पे अब बिल्ड करते हैं अपनी आगे की नॉलेज। तो यहां पर आ जाओ। सो यहां पर नोटिस करना, वी आर इंट्रोड्यूसिंग something again which will be a leap for faith for you. This comes from statistical thermodynamics. Called as law of equipartition of energy. Now what it says is that with each degree of freedom, with each independent dimension of motion, average kinetic energy associated is half kBT per molecule. रिमेंबर आप लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर में केटीजी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था 3/2 kBT. It is actually half kBT plus half kBT plus half kBT, the contribution coming from degree of freedom along x-axis, along y-axis, along z-axis. एंड उसमें हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की ही बात करी थी उस चैप्टर में व्हेन वी वर डिस्कसिंग केटीजी। ठीक है, सो दिस इज अ रिजल्ट दैट कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही फैंसी सा नाम है, इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, बट हाँ इसका रिजल्ट जरूर याद करेंगे दैट according to this law of equipartition of energy, each degree of freedom, or I would say each contributing degree of freedom, okay, I should use the word here contributing, each contributing degree of freedom is associated with average kinetic energy of half kBT per molecule. Now if I add the contribution of the contributing degrees of freedom, so say F is the contributing degree of freedom, it is the count of contributing degree of freedom, then average kinetic energy per molecule कितना हो जाएगा? Average kinetic energy will be F times half kBT, because each degree of freedom is associated with half kBT kinetic energy. अब आप मुझे काउंट बताओ, नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, लो टू मॉडरेट टेम्परेचर में, व्हाट वाज द काउंट ऑफ F
what was the count of degree of freedom? In case of monoatomic, it was 3 plus 0, that is 3. In case of diatomic and polyatomic linear, it was 3 plus 2, that means 5. And in case of polyatomic nonlinear, it was 3 plus 3, that is 6. याद आया? ये टेबल से मैंने निकाला ना. Correct? So now, average kinetic energy पर मॉलिक्यूल लेवल पर कितना था? हाफ केबीटी. और पर मोल लेवल पे कितना हो जाएगा? Like this is, let me highlight in different color. पर मोल लेवल पर कितना हो जाएगा? F into 1 by 2 RT. Instead of KB, you use R जब पर मोल पे बात कर रहे हैं. एंड F का वैल्यू आपको पता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है. So coming back to our original result, wherein we were talking about the change in internal energy for an ideal gas, which is equal to delta Ke. So now we can write change in internal energy for an ideal gas. ठीक है. Not for solids, not for liquids. For an ideal gas to be equal to F by 2 R times delta T. ठीक है. So we understand that we can now talk about the change in internal energy for an ideal gas. It will be F times 1 by 2 R into delta T. F would depend upon the type of molecule that we are talking about. If it's monoatomic, it is 3. If it is diatomic, it is 5. It is polyatomic linear, it is 5. If it is polyatomic non-linear, then it will be 6. यहां तक का पार्ट समझ में आया आपको? Is this clear? हाँ. क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे दोनों तरफ डेल्टा लगा है ना. यहाँ पे डेल्टा लगाऊंगा तो ये टी के ऊपर ही डेल्टा आएगा ना. ठीक है. अच्छा, अब ओवर एंड अबव दिस, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ के आपको बुकलेट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है. इतना पढ़ने पर आपको बुकलेट के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे which talk about this change in internal energy for an ideal gas. But as an extra piece of knowledge, as an additional piece of knowledge, now ये राइट हैंड साइड वाले कॉलम के ऊपर फोकस कर लो. ठीक है. राइट हैंड साइड वाला कॉलम क्या है? इट इज नाउ टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. For monoatomic, it is understandably 0. For diatomic, it is understandably 1. ठीक है. ये फिर भी समझ में आ जाता है मोनोएटॉमिक के लिए 0 क्यों है और डायटॉमिक के लिए 1 क्यों है. बिकॉज ऐसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, डायटॉमिक में यू कैन थिंक ऑफ द बॉन्ड टू बी लाइक अ स्प्रिंग एंड उसके अबाउट आप मोशन के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है. बट पॉलीएटॉमिक के केस में, ठीक है, पॉलीएटॉमिक के केस में this becomes a challenge. This becomes a major challenge in terms of understanding or visualizing. I would not say understanding, but in terms of visualizing कि vibrational degrees of freedom मैं कैसे consider करूं. Now to make long story short, ठीक है, to make a long story short, यहां पर आप notice करना, if I have a polyatomic molecule
ठीक है. If I have a polyatomic molecule and I have to think about its possible degrees of freedom, all possible degrees of freedom, ठीक है, all possible independent dimensions of motion. So what I would do is I would simply multiply the number of atoms by 3. Her atom, take each atom and think about that each atom can have a motion that can be understood along 3 independent dimensions x, y, and z, each atom. And a combination of all of them together means 3 times n would be all degrees of freedom associated with a complex molecule. So this then helps you to understand these formulas that अगर टोटल मेरा 3n था और यहाँ पर ऑलरेडी 5 आ गया है, तो फिर बाकी सब मैं फिर वाइब्रेशन को कंट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट कर दूंगा. विजुअलाइज नहीं करवा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है. आप बोलो कि सर विजुअलाइज कराओ, तो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा ये. इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड टू विजुअलाइज. लाइक वो डायटोमिक में दिक्कत आ जाती है. तो ऑल यू कैन से इज दैट ये सम यहाँ पर 5 है, तो 3n minus 5 विल बी द वाइब्रेशनल डिग्रीज. ये सम यहाँ पर 6 है, तो 3n minus 6 will be the vibrational degrees of freedom. Okay? This is something which is what I can best make you understand, where n, that capital N that I have written, represents the atomicity. Right? Atomicity word to आप familiar हो ही. Atomicity represents the number of molecules. So number of atoms in a molecule. Right? So if you have a complicated molecule, जितने भी atoms हैं, हर एक का 3 independent dimensions of motion हो सकते हैं. Right? So overall degrees of freedom can be 3 times n. And from there, we understand this formula of 3n minus 5 and 3n minus 6. अच्छा, अब इसमें एक और छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी एडेड है, वो भी आप नोटिस करना. दिस इज समथिंग विच आई हैव रिटन ओवर हियर इन नोट, दैट हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कब कंसिडर करना है? ओनली इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर. ठीक है, इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर वी वुड कंसिडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड ईच vibrational degree of freedom will contribute half kBT plus half kBT per molecule. Like translational rotation के लिए कैसा था? Just half kBT, but rotational के लिए it will be half kBT plus half kBT. That one part will be for kinetic energy and the other part will be for potential energy. ठीक है. सो अब इस चीज को अगर मैं याद करूं, ठीक है, that how many vibrational degree of freedoms were there and what will be their contribution, then you can answer me these quick couple of questions. C2H2, ठीक है, this is acetylene at moderate temperature. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस में? This will be polyatomic linear. Correct. So the answer will be 5. And what will be its average kinetic energy? It will be 5 by 2 into RT per molecule, and then change in internal energy can be written as 5 by 2 R into delta E.
Okay. If I talk about the same molecule, C2H2, under high temperature conditions, then what would be my answer to delta E? How will I write delta E for C2H2 under high temperature conditions? नहीं, प्रॉपर ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशन में ब्रेक डाउन करो अपने थॉट को एंड देन गिव मी एन आंसर. कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? अच्छा चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं. कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? ट्रांसलेशनल 3, करेक्ट. कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे? 2 विल बी द करेक्ट आंसर. वाई श्रेया? ये लीनियर है ना, C2H2 इज पॉलीएटॉमिक लीनियर, है ना. ट्रांसलेशन का, हाँ, ट्रांसलेशन के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, वाइब्रेशनल के 2 हुए. सॉरी, वाइब्रेशन के, रोटेशन के 2 हुए. ठीक है. व्हाट अबाउट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? व्हाट वाज द फॉर्मूला? 3n-5, करेक्ट. तो इसमें n वैल्यू कितनी है? n वैल्यू है 4. तो 3n मतलब 12, 12 - 5, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 7. ये समझ में आया? अच्छा, अब ट्रांसलेशनल रोटेशन के बारे में क्या बोला मैंने? दैट ट्रांसलेशनल contributes half kBt, rotational contributes half kBt, बट वाइब्रेशन के बारे में मैंने क्या बोला था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले? This contributes kBt, half plus half, half kBt plus half kBt. And वहां से I'll get my expression of internal energy for this molecule, जिसका आंसर will be 19/2 kBt. ठीक है. तो क्वेश्चन में कैसे यूज करना है ये मैंने आपको समझा दिया. ठीक है. डेफिनेटली आई विल कंसीड टू द फैक्ट दैट इसको विजुअलाइज कराना इज बहुत डिफिकल्ट. ठीक है. इवन इफ आई टॉक अबाउट द vibrational part, like translational rotation is still something which is manageable and something that can be worked out, but ये vibration वाले को visualize करा पाना, as I said, is टेढ़ी खीर. It is not something which can be done quite easily. And especially हम इस पे टाइम भी लगाना नहीं चाहते हैं. ठीक है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लाइक अभी तक तो जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है. ठीक है. टिल नाउ, टिल डेट, देयर हैज बीन नो क्वेश्चन इन जेई एडवांस्ड और मेंस दैट हैज बीन आस्क्ड रिगार्डिंग द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. आज तक नहीं आया है. ठीक है. एनसीईआरटी में भी नहीं है एंड बुकलेट में भी नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. बट फॉर सम रीजन in some books it has been mentioned, and since it has been mentioned and it is good to know, I have added it over here. I have added the column and I have shown you how to do its calculation, but definitely I have not shown you how to visualize and understand it in a better manner, because honestly speaking it is not worth it. Okay. One way in which I did try to make you understand that why it comes in this way is, you can think as 3 times n will be the total degrees of freedom, considering that each atom has 3 independent dimensions of motion. ठीक है. हाँ, तो कैलकुलेशन में यहाँ पर वापस से मैं बता देता हूँ ये वाला पार्ट जो हमने देखा था.
अगर वैसे तो आपसे मोस्टली कभी पूछने नहीं वाले, इतना कम चांस है, मॉडरेट टेम्परेचर ही रहेगा, बट लेट्स से हाई टेम्परेचर पूछ लिया कि वाइब्रेशन को कंसिडर करो, तो यहाँ पर जस्ट पुट द वाइब्रेशन एज 3n-5 इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक लीनियर और 3n-6 in case it is polyatomic non-linear. That will be the degree of freedom. Degree of freedom आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद में बस ये लास्ट पार्ट था जिसमें कैसा था, that translational, each translational degree of freedom contributes half kVd, each rotational degree of freedom contributes half kVd, but each vibrational degree of freedom contributes kVt, half kVt plus half kVt, and that's what we did in the end. ठीक है, कैपिटल N represented the atomicity, number of atoms in a molecule. तो C2H2 में कितने atoms हैं? 4. That's it. All right. ज्यादा तो आप इतना ध्यान रखो, ठीक है, जितना मैंने बताया आप इतना ध्यान में रखोगे ना, तो आपका काम बुकलेट में तो हो ही जाएगा, बुकलेट के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, आपको वाइब्रेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करना है, मतलब आप इतना ध्यान में रख लो तो यू आर सॉर्टेड। जितना मैंने ये येलो में ब्लू में हाईलाइट करके दिया है आपको, आप बस इतना समझ लो, ठीक है। इवन अगर आपको चलो वाइब्रेशनल के अलावा कि आपको रोटेशन और ट्रांसलेशन भी समझ में नहीं आया, ठीक है, लेट्स से आपको ये टेबल ही समझ में नहीं आई कि भाई ये क्या ट्रांसलेशन क्या रोटेशन हो, क्या पेन के साथ, मतलब लाइक समझ में नहीं आया क्या पेन घुमाया, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर इतना ध्यान में रख लो कि फॉर what type of gas what will be the value of F and correspondingly what will be the value of delta E, तो भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। Now let's come to the first law of thermodynamics. So quite simple. Yes, you don't have to worry about ki what temperature is high temperature, because अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे तो आपको एक्सप्लिसिटली बोलेंगे कि कंसिडर हाई टेम्परेचर एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी, आई वुड से, थाउजेंड्स ऑफ केल्विन प्लस टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, सो कमिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ध्यान से फोकस करना। दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. What it says is that total energy of an isolated system, in this case universe is isolated, is constant. Mathematically, how we describe it, in differential form we say du is equal to dq plus dw, or in an integral form delta u is equal to q plus w. And let me write it over here. Please don't use delta q और डेल्टा u, ठीक है, मतलब बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने ये लिखने शुरू कर दिया कहीं पे भी। तो इन द इंटीग्रल फॉर्म हीट एक्सचेंज्ड, राइट, ये पाथ फंक्शंस हैं, बिकॉज q and w are path functions, they are not state functions, like u is a state function, तो u के अगेंस्ट डेल्टा लगाना सेंस बनाता है, that it is a state function. So the system went from state 1 to state 2
and as a consequence, there was a change in internal energy, and we can write that delta U as U2 minus U1. But these on the right hand side, heat and work, they are path functions. They are not dependent on state. They are dependent on the path. So some process happened. We went from state 1 to state 2. And as a consequence, heat got exchanged. A finite amount of heat got exchanged. And we call it as Q. A finite amount of work was done. And we call it as W. That's it. Differential form में we do write them dq dw, but that is to represent that these are not changes, but these are infinitesimal quantities. Infinitesimally small quantities in the differential form. समझ में आया यश? So now, to help you understand the first law of thermodynamics, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नोटिस करना, लेफ्ट हैंड साइड is the change in the internal energy of the system that happened. Now, why would there be a change in the internal energy of the system? Because of energy exchanges with the surroundings. And how do we describe energy exchanges with surroundings? We describe them as heat and work. And that is what is the mathematical form of your first law of thermodynamics is. अब नोटिस करना साइन कन्वेंशन का यहां पर कैसा इंपॉर्टेंस रहेगा. ये क्वेश्चन से आप ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस. किसी का आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. ठीक है. इफ यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, लेट मी हेल्प यू. वर्क डन का इतना फॉर्मूला था, इतना मैं हिंट आपको दे सकता हूं. बाकी आप थोड़ा कोशिश करो एंड लेट्स सी.
All right, I've started getting some answers. देखो साइन भी important है. That is where plus and minus sign plays an important role. So the correct answer is option B, minus 289. अब किस तरीके से यहाँ पर अब आप नोटिस करना. Maybe some of you were able to get the answer, some of you struggled with the answer. इसमें एक और हिंट जो आपके लिए रहेगी, that will be that 1 ATM liter is 101.3 joules. बिकॉज आप प्रेशर जब ATM में और वॉल्यूम लीटर में मल्टीप्लाई करोगे एंड बाकी सब के साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, तो यू डू मल्टीप्लाई दैट बाय 101.3 टू गेट इट इन जूल्स. ठीक है. नाउ अब कैसे करेंगे, एक एक वर्ड अच्छे से रीड करना क्वेश्चन का. अ गैस एक्सपैंड्स मतलब डेल्टा वी इज प्लस 3.4. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में, तो डेल्टा वी शुड बी प्लस 3.4 बिकॉज इट इज एक्सपैंडिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ओके. देन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है विच इज 2 atm एंड दिस काइंड ऑफ मेक्स द प्रोसेस इरिवर्सिबल, बट ठीक है, मे बी अभी यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद इट मच बेटर, बट बाद में बताऊंगा मैं. एटलीस्ट चलो इतना दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm. सो वर्क अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वर्क माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, अब क्योंकि पी कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, ये माइनस पी डेल्टा वी बन जाएगा. एंड आई पुट डाउन द वैल्यूज, बट मेक श्योर दैट आई रिमेंबर द interconversion of units, and my answer of work will come out to be 2 into 3.4 into 101.3 joules. All right, what about heat? What should be my value of heat? हीट यहां पर बोला जा रहा है अब्सॉर्ब हो रहा है, राइट, दैट वर्ड मेक्स एन इम्पैक्ट. ठीक है, यहां पर ये अब्सॉर्ब हो रहा है. ठीक है, ये यहां पर ही एक्सपैंड हो रहा था. ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है. एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके, धीरे धीरे आप लोग रियलाइज करोगे. थर्मोडायनेमिक्स इज दैट वे आर रियली chapter that requires a lot of focus. So यहाँ पर heat absorbed is going to be 400 with a plus sign because it is the heat absorbed. So you got Q, you got W, and now by applying FLOT stands for first law of thermodynamics, you got delta U, and that gives you the answer as minus 289. ठीक है, तो यूनिट्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और है, बट ठीक है, आई विल नॉट ओवरशूट द टाइम. आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, तो यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, वाई प्लस 400 बिकॉज ये अपन ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, भूल गया तुम, बहुत जल्दी भूल गया मैं. हीट अब्सॉर्ब्ड इज पॉजिटिव, अभी समझ में आ रहा है, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, चलो यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. आई गिव यू 1 or 2 questions to practice and then we'll begin from here itself. हाँ, नहीं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है यश कि लाइक ऑटोमेटिकली जो साइन आया वर्क का वो आपको बता देगा. क्या साइन आ रहा है वर्क का? नेगेटिव. तो वो बता रहा है दैट दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. ठीक है, ऑल्दो आपको एक्सपैंड वर्ड से भी हिंट मिल गया था, बट मैथमेटिकली स्पीकिंग इट इज द नेगेटिव साइन एसोसिएटेड वर्ड दैट गेव द आंसर. ठीक है, हाँ, एटीएम लीटर तो क्या मैंने हाँ राइट गैसियस स्टेट में बताया था इंटर कन्वर्जन, बट ठीक है, नाउ यू नो इट. इसमें इस चैप्टर में काफी ज्यादा लगेगा. चलो ठीक है गाइस, ऑल राइट, टेक केयर.
हाँ लो आंसर भी देख लो, ठीक है, चलो, ऑल राइट।